right, let's do. मैं अभी आज का दिन मैं डेमो पे जाना ठीक, चाहती हूँ। no problem. मेरे पास इतना अभी कॉन्फिडेंस ठीक, नहीं है, no problem. सो फिर मैंने हॉलीडे जाना है, तो मैं एक दिन ना वो उसके साथ वो टुलिप है उसके साथ मैं 1-to-1 सेशन लेना चाहती हूँ। हाँ, जब वो आएंगे तो उनसे बात कर लें। अच्छा, मैं उसके साथ ही हाँ बात हाँ, करूँगी, उन्होंने तो ठीक वो है, आपको सेट क्योंकि कर। फिर मेरे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस No आएगा, problem. क्योंकि देयर इज सो मेनी थिंग्स कि मैं वो क्वेश्चन सभी के सामने कर नहीं सकती। सो आसान बता दो, दोनों ग्रीन है, बाय में रहे, दोनों लाल है, रेड में, सेल में रहे। नहीं, वो तो ठीक हाँ। है, वो ठीक है, बट वो बहुत कुछ लर्न करने के लिए है। हाँ, लेकिन अभी बेसिक्स में देखिए, जब डैनियल की आखिरी क्लास हुई आपके साथ, तो उन्होंने बेसिक में आपको क्या बताया? न्यूज देखें, नंबर 2 देखें, रेंज क्या है, लिख लेना, रेंज एंड बेस। ओके, ठीक है, ये 2 चीजें हैं। मैं बिल्कुल सिंपल करके बताऊं ना, 30 सेकंड। तीसरी चीज क्या है, अगर बुलिश है तो बाइंग करनी है, अगर बेरिश है तो सेल करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, नो प्रॉब्लम। और बस जैसे वो आती हैं वो 1-to-1 भी करते हैं। हाँ जी, ब्रांड न्यू वाले, बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिन्होंने आज उनके ओरिएंटेशन जो है ना, ब्रांड न्यू। All right, guys, if I can get an audio check to make sure I'm good on audio on everywhere, so I can get this thing going. So audio okay, guys? Is my audio okay? Yeah, audio good on Telegram. Good morning, G. Thank you very much. Audio is good. Thank you very much, G, for those kind enough to send me a quick reply. All right, let's do this. One more day. One more day. Thank you, G. All right, good morning, everybody. Tuesday, October 21st, 9:08 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SuperAreas.com. Thank you for coming in person as well as online, at Super Areas and Win Lifetime. Um, my name is Rafay, and I am one of a junior analyst here at SuperAreas.com. This organization has been here since 2008, and out of 8 mentors, I do some personal analysis on these markets. So anything I say here daily, I don't. It's not financial advice. It's not meant for any buy and sell offers, and it's just for informational, educational, entertainment purposes only. All right. So that's out of the way. Anything you can use my analysis, my market bias to make your decision, but we don't make it for you. We don't ask you to buy and sell. So let's just get the legal disclaimer out of the way, so the stream doesn't get flagged. So now let's looking at Forex Factory. U.S. government is still shut down. How long I'm going to do the stream? Until 12 o'clock. So every day, European candle closes at 12 o'clock, 4-hour candle closes. So I do from 9 to 12 every day. Today is Tuesday. Tomorrow I'll do a class on my Zoom starting tomorrow. Good morning, Ji. For those that celebrated yesterday, happy Diwali. And hopefully you guys had lots of festivities. Where are we right now? US government is shut down, maybe a slow day. High to go low is the consensus. Full disclaimer, let me show you my results for my take profit. So if you're watching my live stream, this is what I ended up doing, because I had said to everybody, stay short in gold. Personally, that I'm going to, and a nice chunk of profit, because 43.98 it won to, and I said around 95 would be a good number. So if you took gold trade, this is what I did. Was most of it came out of gold.
And look, it ended up giving me quite a bit of profit from this, almost 17, $1,800 out of it. So I think when I woke up, so every account is a pro account now. So as you guys can see, so in order to get paid on this account, I need to make this $2,000, and I can make that. So I have a $2,000 threshold, and after making $800, I'll start to get daily payouts from there too. These ones are $25,000 accounts. I need to get to $1,500, and I'll get paid. So high to go low is the plan. Let's wait for Daniel's brief, and I have to go and change one thing, which is the gold highest high ever. The MGC, what's the highest high ever became? 43.95 is now way over, or 98, I believe. 93, 43.93, and it was just went up $1. So let's update that slightly to 43.94. Let's put up that 43.94 as our. So these are not the targets for today. What will I be doing? I'll tell you. Let's write our base and the range for the day. So I open up my notebook and I start writing some plans for today. So like my pen. So every day I come in, I write some stuff. What do I write? Of course, the date first, so 21st of October 2025. And those, let me grab my coffee, tea. So my ritual has been coming along, filling up these books for a long time. Second, where did I put my drink? Right here. Okay. So guys, I've been doing this for quite some time. Let me show you some basic notes. Take a look. July 23rd, 2022. Look, higher highs, higher lows, some notes. July 24, 2022. These are some whenever getting into futures market. So took a ton of notes. How to work. February 19, 2023, right? Along with the line, this notebook is quite full. Then the new notebook came, and then another notebook came. And my look, let's see. Starting balance, ending balance. We have records of Monday, March 23. So what I'm just saying is the point of this is today, write down something so you have a historic data as well. It helps you if you want to do these days Google Sheet. So I always now these days been using Google Sheet instead of writing manually. What's our night session highs and lows? Let's take a look. So market did not move so much. 25,358 is a high. 25,368 became the high. 25,253. 253. So $115 move. Where are we right now? The price right now is 25,288. So very close to S1. So again, night session and S1. So let's hear Daniel's brief and then we'll decide where to buy, where to sell from approximately. So my personal consensus, let me turn on news because anything can happen. Two things that I keep my screens on is number one, Bloomberg USA to see, and number two, CNN. These are the two. And if you're looking for Canadian news, and yes, congratulations to Blue Jays. If you're a baseball fan, they defeated Seattle yesterday 4-3, game 7. I was in downtown.
Not for that. My daughter had to go to a concert, and the fun was quite exciting, vibrating. Okay, so price is at expected low for gold, and for today, yes. The moment I'm not buying gold, by the way. Just saying, it's let it go. I will wait for price most likely to break um, somewhere. Because remember, 25,400 is our all-time high of 25,400, and 6812 is high. So I'll start writing what to do in NQ, what to do in ES, and what to do in GC. We'll worry about this when time comes. But yes, Jacinder Ji, correct. 25,394 and 6812. These are the numbers for. Let's put this back in my thing. So earnings, U.S. government shut down. I know website hasn't been updated for the earnings calendar lately, but today big company Netflix, Coca-Cola, GE, RTX, and Texas Instrument, and a few others. So Capital One Financial. Will I buy gold? No, G. Already area came, touched, and went back up. I will sell gold. Around my gold price is, give me an area for a second. 43.62, 4,400, 45. Let me see 30-minute chart on gold quickly. 4,400. So I'll do short on gold at 4,400. So that's the plan for gold. 4,400. A little bit above expected high because all-time high is 4. So gold all all-time high is 43.94, which is the GC December Z5 contract. No, I'm not buying gold. Sorry. So let's look at most likely I'll be shorting ES. Give me a second. Okay, let me just move this screen here. So always I like to hear Daniel's brief before I start going into any on my own decisions. Just would like to get a confirmation always. This institute has given me a lot of freedom, has given me a lot of knowledge. I'm loyal to this. So it doesn't matter what other people teach. I will only teach Win Lifetime software for the rest of my life. Okay, thank you in advance. Sorry I didn't see the message. Yes, give me a second. High to go low. Most likely high to go low. Don't worry, for Murtaz and for other guys where the camera doesn't randomly disappears, I will get that fixed as soon as 4,400 is the upper band of 60-minute. Why did I pick 4,400 on gold? Upper band of 60-minute. So always have a reason why am I taking this minute. So 60-minute upper band is sitting at 4,400. And I'll take notes as he speaks. Just I
I don't read anything on TikTok, guys. You have to WhatsApp me. Sorry. Any advice for what, G? For what? I send me WhatsApp. There's so many comments. I don't know what advice you're looking for. I don't give financial advice. Just use funded accounts and make money. That's it. Free money, man. How fundeds work. Month is 11. Sorry, month is 10. Today is Tuesday, the 21st. So this is our 1, 2, 3, 4, 5, fifth week in the month. So 21st. Whenever I run out of calendars. I can't read above. Sorry. Send me a WhatsApp. I TikTok is just one way out. Any funded on sale? No. I'm not going to read and scroll on what's TikTok is not the platform I use to answer our subscription. You have to send me a WhatsApp. And then if you're a member, then I will reply. Right now, Take Profit is on sale, G. Take Profit is on sale. And waiting for Daniel's brief. Two minutes, Daniel. Brief is going to start, and then I will switch the mics over, and then I'll put in the other mics for clarity. Okay, pending charts. So this is an organization. How old? Since 2008. What's the WhatsApp? 647-228-0694. Wait, let me see if Bullnox is on sale. Let me log into my affiliate network. Affiliate. Yes, Bullnox is on sale, but 75%. Just letting you guys know it's on 75%. So Bullnox is on sale for 75%. So how much does that come out to? 25,000. You're looking at about $36. So Bullnox is, if you're looking at 50,000, it is $43. 75% off. Bullnox code is SuperAreas. 21st of October, 2025. Okay. Which company is this? Bullnox for 75%. But the best company that pays you daily either is Take Profit, which is $90, code SuperAreas, all capital, or your
why people instantly call. I don't pick up phones. Daily company that company pays is Purdia Capital. Bull Lonks 75% off. Code SuperAreas. So remaining. So if you're new, by the way, you don't have experience. Tomorrow is my session, 6 p.m. to 8 p.m. for our members. So 22nd of 22nd October 2025. My session is from 6 p.m. to 8 p.m. on Zoom. Ask me questions. Take profit. So 6 p.m. I will do a Zoom session tomorrow. Some basics about funded account. We'll dedicate. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Shri Akal. Hello, guys. Game show. Walaikum salam. Hikesh, Vikas, good morning. Shaji, good morning. Lakhani ji, Taimur bhai. Ji, bilkul ji, it's not going to go normal. It will take a little time to be normal. Amir bhai, Majid, good morning. Manpreet ji, Amrit, Rizwan bhai, Samir. Anita ji, good morning. Manish, good morning. Jagdeep ji, Naveed, good morning. Amar, good morning. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or on our training floor not attended. As trading advice, they're just meant to enhance your trading decision, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think. And treat this market the very first day you treat, and all the areas we have on our SuperAreas.com or on our graphs. Not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only. And we take no responsibility at all for any action taken by any subscriber. Today, our S&P 500, NASDAQ, Dow, Russell 2000. Russell is little going down. Below PP, but overall our base is up, pressure is up in a very strong diversion to the downside on NASDAQ and S&P 500. Today our S&P 500 expected high is 68.55 to 68.67. Our low is 66.84 to 70. Our NASDAQ, our high is 25,700 to 780. Our low is 24,890 to 800. I will stay brief today. So today, best is high to go low. No news today means that no any scheduled news, but today's speech is done, and then 3:30, and then nothing going on today. Again, I told you we'll be so weak only when our inflation data is coming. That news. Today, if you see S&P above PP, NASDAQ, right now even Russell 2000 is above PP. Best is high to go low would be a good strategy. And then we have our Euro session. British pound is down. S1, S2 area. At Euro, even it bounced back down, but in a doldrum.
but euro is really down. British pound at S1, euro at S2. A big hit on euro, a big push to the downside. Canadian dollar hit our expected high. Why? Because October 29, there's 80% more chances are they will cut the interest rate. So that's why Canadian dollar is very nicely pushed to the upside. And crude oil, if you see, pushback up $1.81. Very close to our expected high for the day. So we have to be very careful with the crude oil. Long-term crude oil is down. So meanwhile, it's going up right now. FTX came down yesterday. Our expected high bounced back down. Right now, euro session went up. Right now, above PP and at the top of the value area. Gold just kissed our expected low for the day. Gold, I'm telling you, before December it should go down to get more room to the upside. So that's where the gold is sitting. In between S1, S2, and our expected low for the day. So $196.30. That's a huge push to the downside. The copper is down. Copper at S1 area. If you see a big push to the downside, 12 cents push to the downside. And right now at S1 area, silver 100% hit our expected low, 48 plus, and right now, still at expected low for the day and still pushing down our silver. Natural gas is up. More further we're getting cold, the further natural gas will go up. Very close to our expected high. Just kissed our expected high. And right now, if you see at in between R1 and hold on, guys. Hold on. Hold on. Yes, John. Sorry, guys. So natural gas came down, creates a diversion, very strong diversion to the downside. And right now, in between S1 and R1 and PP area, Bitcoin came down yesterday, our expected low. Right now, bounced back up. Magenta midband, hold by PP and Magenta midband. Same thing with the Ethereum. Same thing with the Ethereum. The low PP, yesterday expected low is done, and right now paused and doing nothing. Again, guys, will be a smooth day, slow day. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. All right. So what's the plan? Let's figure out a plan first for our markets. So the plan, let's do the plan. Oh, good morning, Ji. Bhai, kya chal hai? All right, so the plan is, so I wrote a few things while the brief was going on. So I have a habit of writing 4 things, of course 5. Base pressure, range, pivot, highs and lows, right? So base and pressure is up because opening above the PP. So my PP is 67.58. And then you have pivot 25 to 40. What is my plan? I will wait for the price to break NASDAQ. 400 should be okay. 430. So NASDAQ, let's pick the number 450. So above R1, slightly at a R1 pivot, Ninja pivot, R1. So let's do the first one is at 24,450 should be okay. Sorry, 25,450. If it makes a
So it's an R1 and slightly so ninja pivot. A ninja pivot 25,450 should be a good. You cannot trade on Mac. Sorry, our software works on Windows. So yes, remember all-time high is 25,450. Not on that. 6812. So let me try to pick up a number somewhere above 68 13 12. Give me a second. We are looking at 68. Good morning, G. Yeah, 68. Let's pick the number. I think R2 should act like a good resistance, definitely. So 6832. 6832 is the plan. And of course, you want to buy green to green midband to buy, red midband to sell. So 3020 is in a bit of a divergence. You see, strength is not going up. Gold 4400 shorting. So I'm shorting gold from 4400, ES from 6832, which is your R2, and pivot, ninja pivot, and R2 is there. Magic band is there on 30 minutes. So quite a bit of a resistance there. And R1 on NASDAQ. So let's see. It's a slow, dreaded day. Don't get caught into it. I mean, there's no news, there's no major earnings. Russell, oh, somebody took Russell, S2. So, yes, I know he had to do something, and in some a call, important call came in, and that's why, yeah, that was a bit of a short brief today. But to be honest, there's nothing to say or do. Now, I will soon give the mic to Majid Bhai. He can do his brief. Also, a good question. Sorry? Okay, okay, no problem. Um, where should a person buy? Yes, the boxes are there. The boxes after a divergence of 67 high. Expected low will work good. Expected low on ES should work. Very good support because the blue boxes are there. So if you're thinking of going long, somewhere around 66.84, and of course, always put your stop losses. But the ultimate zone to buy is somewhere 66.31. That's a 66.31. But we got quite a bit of a range to go before. So these are the support and resistance numbers for today. And guys, for randomly, I'll just turn off TikTok because it's a lot of free information is going with for those that are not subscribing. So I'll just randomly cut out audio on TikTok. But last night gave me good movement in gold because I was in short and live. I was in short on what do you call it, bull longs, and I was short on my take profit. Because the number, if you repeat back, and I had said the gold is if above 43.95 or in that zone, you should wait for it. And so, because nothing is happening, maybe we'll look at a different market. Let me see what gold is doing. Okay, gold shot from back up from our expected low. Wait, if you want to short gold, wait for at least 43.13. Only areas only subscription is $150 per month. Areas only 15 markets Monday to Friday and evening areas, and then 10 markets on Friday, and then of course Monday. Good morning, G. Thank you for your blessings. This is not a again one-man show, guys. This is 8 mentors doing their own thing. Vikramba is doing his own. It's just in a slow, dead market because again, markets are all-time high. You can get stuck and then
Let's see if pivot acts like a support first. Because yesterday we sat here. We don't do binary G. We don't do any of that stuff. We do U.S. markets, CME, Chicago Mercantile, COMEX, CBOT, NYMEX. We don't do any crypto stuff, and we don't invest our own money at the beginning until you know how to trade. We don't over leverage ourselves. We do micro, so we have a strict set of rules. We don't rush, and then our goal is 5, 8, 10 accounts per account, $100 adds up to $1,000 a day, no problem. And I've shown my results over and over. What to do? Okay. It's a first pullback. It did not break 77. So our night session high is 85, 67, 85. Like yesterday, there's barely any move. Question is stop loss for midband, higher high minus 8.5. So right now, for example, if you're looking at your 1510, price has gone to 6.5, 6.75. Until 8.5, you can hold the trade. So it's a higher high minus 8.5. Well, let's see. Is there any sale? No, the only bull lock 75% off. There you go, 8. Still hasn't, no, two more ticks. No. So the word is consolidation. Look, price goes up $14, comes down $10, went up $9, came down $9. So let it, yes, they will give you as much, they just technical support. All right. Bit of a direction. We are at S1 officially on where's my alerts? Alerts, I think S1 was already done. Yeah, I think we are in S1 right now. What's the plan, G? I'm waiting for the price to go to 25,450. So S1 got approached. So we are in S1 and pivot is falling in the same time right now. S1 and pivot. So kind of give, what's the lowest it went to 60. So you can call S1 done officially. 234 to 250. So S1 is officially done for NASDAQ, the morning. So right now it's at pivot. This is how the market used to be slow. So ES is gold is 6. That's an old alert. Gold already touched. So let me update it. Gold is already, so S1 is done for both markets, pivot and S1. So it went as low as morning low is 235. So our area was 220 to 240. So S1 is done. I did not take S1, but 25 to 35. 25 to 35. And it went as high as morning trade was
No. 25,300. $65 move, and it's testing S1 again. Let's see. The mid band worked. First pullback from ES. The first pullback is done. Jatan, by my plan again, like yesterday's high to go low. So 450 is my plan. 25, 450. And buying, I'm not doing until at least 25,000. So 240 points from here. If I were to go buy, hit and run, 25,000. So they'll put us somewhere in between S2, support level number 2. So S2 and R1. So 25,000 S2. This is your, because if you look at, there's a red line going through the chart. Let me double check and it will tell you which line it is. So that is last week's low, most likely, or lowest low of, yes. So again, tested S1 again. If you're done from a mid band, you're done. If you're done from S1 or PP, you're done. But there's nothing happening in the market at the moment. High to go low is the plan. Yes, at Win Lifetime, we'll have Starlink very soon for those that are struggling with hotspot issues. Because when you have 70 people trying to log in, this is the problem. After divergence, let's see if this midband is okay. All right. See, it wants to break S1. What's over? Good morning, जी भाईजान. क्या हाल चाल है? All is well. तबीयत नहीं हुई सही. No problem. अनस भाई पहुंच गए. एयरपोर्ट से. The second midband worked after divergence. When is Junaid Bhai trading? He is no longer with SuperAreas.com. Frankly speaking, here's the problem we have with some mentors who join, but if you go outside of our syllabus, outside of our program, so he has officially kind of retired from this organization, right? So we have a team. It's a teamwork. It's not a matter of one person show, right? So you have to understand he's no longer part of superareas.com. Independently, you can go talk to him, see if he wants to teach it. But at our platform, we can't give voice to anybody who has their own agenda. It's an organization since 2008. We have a custom proprietary software. So, good morning, जी. भाईजान क्या चल रहा है सर? आज हम Oh yes, sir. No problem. Welcome, भाईजान. Welcome. दुआएं. Oh, like. हाँ जी. Yes. Welcome, sir. Happy Diwali. How are you? बहुत सारा मैं. क्या बात है? उन्होंने कितने तरक्की है, डिमोशन प्रमोशन जो मर्जी समझते हैं. Right, sir. Green to buy, red to sell. हमारी क्या तरक्की होनी? और भाईजान? A1? हाँ सब. Very good, sir. हमारा तो वही चल रहा था, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है. मेरा तो लाइफ ही उसमें गुजर रही है. बस सब परिवार ठीक. So 2 mid bands are done. And आपके तो मैंने मिस कर दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं. ठीक है. हाँ नहीं वो क्या थर्ड वन भी काम करेगा. काइंड ऑफ. चलो 2 मिड बैंड के बाद कुछ तो रिट्रेस बनती है. बस सर थोड़ा सा सिस्टम जरा बदल लिया.
Is there anyone replacing his project? What is the project? I don't understand. What was the project about? He wants to sell a strategy which we teach for free. Green to buy, red to sell, right? So it has to align with our values, our principle. Like we don't charge anything other than like you can take my sessions for free. You can sit down with the mentor when you're part of it for free. You can sit down with Mr. Majid. Here in this room, you can come and trade with us, no problem. Because there is nothing that any of the mentors teach that is part of outside of Mr. Daniel, our CEO's strategies or software. That is no such thing at all. So if somebody claims they want to teach something different, I will. Sorry, Mr. Jack. The what I was saying is today we ordered Starlink at Win Lifetime, so we will have. It's not SuperAreas. You buy the software and there's no room here. Literally, there's no room. You can just listen to me for free. I'm not charging you anything, right? I'm giving you the number. I wrote here. What am I gonna do? 25,450. 25,000 अगर मेरे साथ आके बैठना है तो पता नहीं मेरे इसमें से कौन सा करंट निकल रहा है जो आपको चाहिए यार नंबर दे दिया बस खत्म करें वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है नहीं है जितनी आप लोग बना लेते हैं तो नंबर पूरी दुनिया में भेज रहा हूँ खाली आपके लिए नहीं हूँ और मैं एक एनालिस्ट हूँ मेरा फ्लेवर नहीं पसंद नेक्स्ट रूम चले जाए मिस ट्यूलिप का उनका फ्लेवर उससे आगे है जी मिस्टर विक्रम का वो आगे रिपोर्ट दे गए हैं 3 मिड बैंड्स डन तो पूरे का पूरा सिस्टम रन्स विद आवर सीईओ उनका सॉफ्टवेयर है और हम सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करके सिर्फ सेल करते हैं उसकी एरिया सेल करते हैं जी गुड मॉर्निंग जी awesome. तो रोज आए मॉर्निंग में एरिया ले लें मेरे से ले लें माजिद भाई से ले लें विक्रम भाई स्कैल्पिंग करा रहे हैं ट्यूलिप जी स्कैल्पिंग करवा रही हैं नीचे आते हुए 3 ईएस के मिड बैंड चले हैं अब मैं वेट कर रहा हूँ 25,450 का और सर सुनाओ मैं थोड़े कुछ मैसेजेस देखे ने हूँ लेकिन पता की है मैं नहीं पढ़ता रीजन है कि ਜਦੋਂ तक व्हाट्सएप नहीं आएगा वो मैं पढ़ किसी मैंने कोई मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करना होगा ना मैंने व्हाट्सएप करेगा हाँ नहीं वो बिल्कुल ही मेरा तो सारा सिस्टम ही अपसाइड डाउन होया है व्हाट्सएप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਨੰਬਰ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਸੇਜ हाँ हाँ नो प्रॉब्लम सर आज नो प्रॉब्लम ਹਜਨ ਭਾਈ ਸਾਡ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗਿਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨੈਨਲ ਦੇ 4 ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਸਟੇजेस ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਐਡਵਾਂਸ मीनिंग कि अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ NASDAQ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਵਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ 240 ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਮੈਨੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 25,450 ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ R1 ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ तो शुरू से तो दसना है मिड बैंड की है या एरिया की है या लाइना की है ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਲਾਸਿਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਟਿਊਲਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਸੈਲ ਬਾਏ ਸੈਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਮੁਰਤਾਜ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ नहीं वो असल सिखाना चाहते थे डिफरेंट चीज़ां
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 8 ਮੈਂਟਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਮੀ 12 ਵਜਣਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾ ਯਾਰ। 10.2 ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ 200 ਕੱਢੀ ਜਾਓਗੇ, ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਾਈਕਰੋ ਹਾਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਕਰੀ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੌਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਅਗਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਊਂਡਸ ਔਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਈਏ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਪॉपअप ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। Another mid-band worked. It's okay. So, sir, 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਨਾ। 9 ਚੀਜ਼ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਰ? ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਪੂਰਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਲੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ। 9 to 11 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। लेके आए ना पूरा ठीक पैसे का काम लेके दो पूरे पैसे बनाओ तभी मैं कह रहा हूं पैसे का लालच होगा ना। नहीं सर पहले एटलीस्ट महीना 2 सिस्टम ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सेमिनार ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖ ਲਓ। नो प्रॉब्लम कोई नो प्रॉब्लम। All right guys, price is approaching. Bottom of the S1 is done too. Or if you took it, S1 bottom on NASDAQ is done. So let me update that. Bottom S1 is done. So another mid band on ES.
Yes. Yeah, no problem. Another midband, fourth midband going down on ES is done. So if I'm counting the how many midbands, 1, 2, 3, fourth midband going down, by the way, is successful. And price is approaching S1. So I'm waiting for S2 NASDAQ to 25,000 should be a good support. Finally, the price is coming down. Oh, party se thoda thoda utar raha hai. 4183 for gold. So 4 midbands are done. All right, price is approaching S1 on ES, guys. Yeah, any company is good. With iCore 7, it's fine. It's any company. We just only the fastest charts are NASDAQ. So, so, so keeping an eye. Okay, gold is heading. Let me see when would gold be a good buy? 4100. 4100 is for gold for me to good buy for a few dollars. 4100 since it's not going the upper. Yeah, even if you buy the software after 4 months, you got to start paying 150 a month. Or you can take the lease to own option and for 48, 24 months, something. All the prices are on the website. Sorry, it didn't go so much to our expected, I mean, S1. So let me double check one. Bottom range is done of NASDAQ 220. Calmly fell down and went back up. Another midband, fifth midband is heading there. Fifth pullback. Another midband give you 2 points. Least SuperAreas.com, right in the middle. You will see lease to own for 24 months. So look at this, and then if you take the software, you're able to take the classes. So fifth midband is still profitable. So divergence on 30-minute is causing the price to go. Okay, so 4167. Let me give you gold price. Exactly how far can it fall? Give me a second. 80, 76. Yeah, right now it's 80. The next level is
4,100. Yep, 4,100 is the next level. So it went to October 15th level today, right now. It fell a little because the previous was 96. It broke there, and now it went to slightly below. I'm waiting for the price to get to 41, 4105, 41. Take the first pullback. First midband is the best midband as per Daniel too. Every time it changes direction, you can take all midbands, and but remember your stop loss. If you're done your 3 or 4 midbands and then you're done your few points, you're done. Pick a different strategy. So 10 o'clock candle. So 4105 is the next number on gold. If you want to go long, 4105. $60 finally has boxes on NASDAQ. So expected low will definitely give us something. 25,000 number should give us. सुपर एरिया ये इन्होंने शायद वर्क स्पेसेस में जाके देखें टेम्पलेट्स गलत तो नहीं चूज कर लें. No MNQ December 60 minute. There's boxes green and इन्होंने कुछ भी नहीं किया. फिर ये इधर फारग हो जाए ना तो फिर हाँ बाद में करवा दीजिए. There are boxes. Gee, one box below S2 and below expected low MNQ December 25. You will see boxes. So let's see if it goes inside that red box of around 70 on ES 3020. Shot back up 10 points. Let's see if it goes and breaks. Whenever he says high to go low. Now look, that's a first pullback. Trend change, first pullback. That's a gap trade, by the way. In green. The first pullback worked, gap trade. A couple of points there. $15.10. It was a gap trade, by the way.
couple of points gap trade. Yes, if it goes to, it will most likely could create a divergence. Okay, profitable trade so far. It has given you guys from 65, almost 2 points, pulling back up. First pullback on green. And going and going and gone. It should go up to 71 because the red box is there. 73, sorry. It should go up to 73. SRES is building on, did not make another higher high. It all depends. If NASDAQ breaks 180, then we're going down, by the way. It has to break 25,180. That's a critical number. 25,180 needs to break. And ES needs to break 41st, 60-minute mid-band. We have a few things in between. 60-minute mid-band will give you. Can you explain the 9 things? Yeah. The mid-band and nine things are mid-band, overbought, oversold. All right, Mr. Happy, Zoom is active if you would like to go and check there. 521470. All right, pulled back up. Oh, that case is solved, by the way. Majid bhai, case is solved. Yeah, no.
अब ब्रेक ले लें. है? हाँ नहीं, मैं डाउन टाउन में था ना, तो मैं अपने बच्चे को लेके गया था कॉन्सर्ट में, तो मैं वापसी पे फंस गया. तो मैं क्या हुआ, क्योंकि पहले वो हार रहे थे एकदम, मेरा ख्याल है 9th इनिंग में कुछ हुआ. तो मैं तो क्योंकि इतना वो गुल्ली डंडे का फैन नहीं हूँ, तो no, I think they just spoke over the phone and agreements, which is okay. I don't any. Beautiful mid-band first attempt. So went to the red box. It's pulling from the red box. Let's see. Well, the first pullback worked. If anybody took that gap trade / mid band, and 74.
All right, we're back up to same price where we kind of started. So pull back up. Gold is heading to, waiting for gold to go to 4105. Long, for personally long, 4105. Groups, pro 1, 2, 3, 5, 6. 2468. Gold has a new low, 4167 for. Let's see if it goes back up to. NASDAQ wants to go back up to R1. Time will tell. All right. Very good. ठीक है sir. No problem. Look. Another mid band worked. If you maybe missed by $1, but another mid band is okay. Let's see if it makes a higher low here, then it will go down. It needs to go to higher low.
61 gold gone to 62. If somebody was short on gold, since they were already done. Oh, too fast. Gold is moving. Wait. That's called a movement. Perfect. Something maybe happened. 69. Gold. It wants to pierce through S1 first. So it needs to go and break 180 first before it does anything. 67. New low for gold. Finally, bit of a retrace, but not the retrace we want. Gold needs to come down to where are we? Let me check the gold. Gold, because daily chart I need to check. Gold. A good gold price would be around 4,000. Yeah, but before it gets to that, 4,100 should be a good retrace. 4105 to be exact. So I'm waiting for 4105. All right, it has pierced through S1 slightly. It made a previous lower. It's bouncing from the green. So let's see, my mid band is around 70, 67, 70. Gold, not much left. So 4105 is my number. 4105. And then let's see. It will give me a few dollars from there or not. Yep. 41 of anytime in extreme low, we should be good. Almost there. 42 to आगे. So 42 पे तो आ गया. All right, 10:30 candle. Let's see, opens up above or below. So our extreme low, be ready, guys, for gold. And yes, NASDAQ needs to break 25,180. Where am I looking from that number? I need to break
240 chart of previous week's high. That number needs to truly break. Oh, thank you, Ji. Thank you. ना भाई ये ले लें. Again, price is stuck very close to pivot. Gold has made a new low of 33. Very close to our extreme low number. That's the one we want. And gold is finally down $200. Retrace. Not much, by the way. It needs to go to 3,600 to be a worthwhile number. So my order for gold is 41,067. GG. Done? Set. 6 मिड बैंड आए, पहला पुल बैक ऊपर जाता पे और मार्केट में न्यूज ना हो तो हर चीज चलती. हमारी स्ट्रेटजी जो भी डिनाई करेगा हम उनको ये नए बच्चे हैं तो उसे बेसिक सिखा दो. उनको पता नहीं डोंट. अच्छा, जो बिल्कुल ब्रांड नहीं हुआ ना उनको वेंसडे की 6 बजे की मेरी क्लास होती है. हर वेंसडे 6 बजे जूम में आ जाए और कोशिश करके सारे देखें. जो है ना ये आपका वाला बताना वेडनेसडे सेशन उनका एमडी पैकेज करवाना है वो वीकेंड पे करवाना है. नहीं वैसे आज उन्होंने जाना था, हो जाएगा. ये एनी डे शाम को कर दें डैनियल को, क्योंकि विन लाइफ टाइम डैनियल ने बोला है मेरे को करने के लिए. आपने करना फिर सुपर एरिया से करवाएं. हाँ नो प्रॉब्लम, सुपर एरिया से करवाएं. पहले उनकी ईमेल तो आई है डैनियल से उन्होंने एमडी पैकेज भेजा है राइट. फिर सुपीरियर्स को आता है ये करना. ये शहर अगर निकाल के डिटेल को आ जाए ये सीख लें. हां तो तो प्लीज मैं करता है भी कर सकती तो मतलब हूं. मैं आ जाऊंगी वीकेंड पे. डैनियल से बात कर ले कि इसको सिखा दे ताकि आगे तो ऑलराइट, फाइनली ब्रेकिंग 180 तोड़ दे भाई. वहां जाके रुक सी जाती है. गोल्ड में 41 14 भी ठीक है, 10 भी ठीक है. द बेस्ट नंबर इज 4105, बट 6-7 तक जो है ना it should give us a good pullback. Again, tries to test day's low, which is 59. NASDAQ असल में जान नहीं छोड़ रही ना. The moment 240, if the 12 o'clock candle goes below 194, you will have a black candle. Because remember, if you look at the 3 candles on 240 chart, they're all closing below each other. So you see an arrow on MNQ 240 chart. It's closing below. So finally, somebody is dumping gold, but 214 points. ऐसे टाइमों पे होता है यार, मैं किसी ट्रेड में ही होता गोल्ड में तो. Just kidding. $25,227. All right, it's pulling back up. Wait for the red box all the way to 74. Wait for it. It's a swing. It's a retrace.
The red box is 74. SRES is starting to build on 3020. I need a candle to the down, then it could break. But NASDAQ is still stuck at S1. What are the 9 things? Yes. Do you know what midband is? What a trend is? What an overbought, oversold is? What a divergence is? What a retracement divergence is? What's a gap trade? What is what? What's an area? What's a pivot? What's base? These are the 8, 9 things that if you know, you're fine. So it should retrace now from the red box somewhere around 74. The NASDAQ could not break that at all. So the red boxes are falling. The fib retracements are inside 74. Let's see. 74 gives us a couple of points. NASDAQ is stuck at pivot. Since whole morning, no change. Pull back up. So if you took 74, you got you a couple of points out of it. 74 to 73 so far. So जी सर क्या हाल है आज वो चले गए ठीक ठाक जी हाँ कि ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ 4 ਕੈਂਡਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਮਿਨੀਮਮ 30 ਮਿੰਟ ਮਿਨੀਮਮ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਨੋ So if you took the box 74, you're done, you're 2 points. हाँ ਇਹ ਸੈਲ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਸੈਲ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਐਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 30 ਮਿੰਟ 60 to 240 5 ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ हाँ ठीक है सर पे कर रहे हैं हाँ सामने आज वो चले गए जरा जल्दी जाना था अपॉइंटमेंट थी $3,000 ਦਾ ਪਰਫਰ ਹੈ ਤੇ 650 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ
नहीं दूजे वाला $90 नहीं नहीं वो तो है $90 था ना, तो पहले ईए करोगे फिर पीए करोगे लाइव थ्रेशर। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं ईए ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ईए ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी। Peaked out. Let's see if NASDAQ maybe this time around will break it. It got to 127. ये हम लोग 30 मिनट है हाँ कैंडल है ये नीचे चल रहा है हाँ जी ऊपर जा रही है जानते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन 3 कैंडल 4 तो बाद ब्लैक कैंडल बनेगी ना, 4 पहले 30 मिनट्स तो क्लोज होंगी अबव, फिर ब्लैक कैंडल अब फिर उत्ते दा डायरेक्शन बनेगा, ये नीचे नहीं है फिर तो थल्ले ही चलती रहेगी, ये कर नहीं पड़ेगा नहीं बनेंगे 4 कैंडल्स एक डायरेक्शन इज क्लोज होगी फिर बनेगी। हर पूरे हर ग्राफ का एक रोल है कि 4 कैंडल उस तो थल्ले क्लोज होना, ठीक है नीचे फिर वही डायरेक्शन वही डायरेक्शन चलती रहेगी, अच्छा जी डायरेक्शन छठी तो बाद होगी। सब तो पहली तो 15-10 चलता ही होता है, 30-20 4 कैंडल तो बाद। सर तो S1 नहीं टूट रहा ना, नैस्डैक ना ईएस था, तो वेट कर रहे हैं, वेट गोल्ड का वेट कर रहे हैं, 24 तक आ गया, तो गोल्ड $10 रह गए गोल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ स्ट्रीम लो तो which 4105 तो चढ़नी चाहिए प्राइस थोड़ी जी। नहीं नहीं 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸਡੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 60 मिनट वाली टेम्पलेट चेक। So it went to 19, 18, 70, very close to our area, guys. Okay. 16. एक सेकंड सर मैं थोड़ा जैन we are inside our area, guys, for gold. Let's see 4105 goes there or not. Trade 4110. Pulled back up. Area is done. Area is done, guys. Area is done. Area is done. Guys, area is done. Gold gave you $4. Area is done. Done. Area is done, gold. Guys, gold area is done. It's testing one more time. It pulled $5 out of thin air and gave you guys. It cannot be, so it's testing one more time that support level. I recommend take profit or bull longs. That's it. Gold area is done, Ji. Gold is done. Another mid band on ES. Gave you a couple of points. Okay.
4101. So $5 it gave us. Now it should do a fast pull back up. Yes, it's testing the mid band, but it's coming from 305 Done. Gold is done. बात को सोचे पे कार्ड बना लो, Sure, sure, sure. right? Because Yeah, if he likes. Gold area is done. If anybody took gold, you guys are done. Gold $6 made. Congratulations. जी. Gold is done, is done, is done. Congratulations. आपने gold बनाया जी बहुत. I'm done with gold too. Excellent. I entered and I'm done gold. Walaikum assalam. So if you took gold, you're done. 14% is done. 4 is done. 5 is done. So I entered at a various rates, but I'm done my gold trade. गाली भी कर दे मेरे और $1000 महीने ना मैंने The gold trade is done, guys. Congratulations. Just wait now. I'll give you the new numbers for gold. How can I judge? SuperAreas.com and just watch. And then the numbers we give you are the very accurate numbers. So let's suppose it went down at 80. Now it will pull back up. So if you took it, you took it. You didn't, you didn't. End of the story. Gold trade is done. SRES, there's no SRES on ES right now. Price is stuck between S2, S1 here on your 75. Yeah, nothing is done here. Should just come blasting, guys. I'm in Mississauga. Yes, we are in Mississauga too. We've been here since 2008. Win Lifetime or SuperAreas.com. So if you're done your gold trades, you are done. Mid-band trade for ES is done. So when we give you numbers, they're very, very accurate. So 90% accuracy since 2008. So now sell gold at 4,300. 4,300 gold should be okay. Look, from 14 to 27. So now we want NASDAQ to go below 180. I know some people have no trade so far. I understand. For unless you took S1 on NASDAQ and ES never got to S1, but gold got to extreme low. That was a good number. So now I'm waiting for price to get to 4,300. So I know, sounds too good to be true right now, right? Wait, look, it has fallen 305 points so far. ES is pulling up, NASDAQ is pulling up. Let's see if it tries to hammer it one more time. Today's low has been for NASDAQ, what? It's 201. Didn't go below 201. 201.
203 to be exact. Because when a guy markets like this, you have to be ready to pull the next trigger at a different market. You can pass bull knocks in 1 day. G. You don't need 10 days. And you can do PA, you need to do 10 days. I need, if it breaks 77.50, then it will start to make a higher high on 30.20. That swing. So it went from 92 to 20, almost $35 went back up gold. But it's okay. We don't care. $375. You never know. Gold is down to. I'm not sure. Who says I was short from 42.01? No, 43.01. 43.01. 30-minute mid band. 43.01. Or 43.03, 43. So, hi. Yeah, no problem. आज वो जरा चले गए. सब्सक्रिप्शन वो एक्सपायर हो गया और आप 50 पे मैंने मैसेज किया था ना आपको हाँ, तो दो नॉक्स तो उड़ गए मेरा फोन no problem. आप सुपर एरियाज पे जाके खुद कर सकती हैं. सॉरी हाँ जी, बैठे बैठे. बैठने की No. Did you buy at 42.05, 41.05? I hope somebody bought it. Is there a percent? Yes, 40%. Next seminar is 2 weeks. Maybe next Saturday I'll do another one. But I need a वो नहीं है, वो सुपर एरियाज के साथ नहीं है. अच्छा हाँ, वो अपना ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्योंकि उनका सिलेबस हमारे से मुख्तलिफ है. तो ये no problem. All right, now yes, has pulled up. Let's see if it breaks 85. $72.58. नहीं, लॉग इन करें ना सुपर एरियाज के अंदर तो ओके. आपकी कौन सी बुल लॉक्स की सब्सक्रिप्शन या कौन सी ये वाली ना जो ये है ना ये वाली डेमो? डेमो हाउस एक्सपायर हो गई है. ओके, आप ऐसा करें ना, ninjatrader.com पे जाएं, एक नई ईमेल से नया बना लें. अच्छा वो मैं कर सकती हूँ. हाँ जी, बैठे बेशक इसको इस पे बैठ. There, yeah. So ninjatrader.com account sign up and then ओपन करके आऊंगी नई ईमेल के साथ साइन अप करना. Because demo works for 14 days. सिर्फ वन डाल दिया था ईमेल एक और दफा वन डाल दें. या उसी ईमेल में आ जाएगा. मेरा पुरानी ईमेल में भी आ जाएगा. या sorry guys, NASDAQ no movement. तो वो बोल रहा है कि ईमेल आईडी कितने डाले थे मैंने वन डाला ना लास्ट में वन डाला
I've done it. Okay. Asking her to do Plus one. plus I think the rush is done. NASDAQ is back to where it started, so $100 move up and down, nothing crazy. SuperAreas chat में मैसेज देखे कि डैनियल से हेल्प करिए. Sorry, because उनको फिर allowed नहीं है win lifetime के. Yep. Yep. आप hotspot से connect करें. Too many people trying to log in here. Look, NASDAQ got pulled up, ES got pulled up. What's dollar gap on between? Let me see. 11 divided. Wow. It's almost dollar to dollar. If anybody took gold from our extreme low, you're done. That went from 14 to 40. Blink of an eye, guys. Don't use SuperDOM, please. Use Chart Trader. Not the best thing. Or NASDAQ back to 300. Let's see 11 o'clock candle. What happens? ES is pretty overbought on 3020, almost 98%. So ES needs a retrace now. It has broken our night session, by the way. NASDAQ 300, almost break back to where it started. With 2 micros in ES above PP, The core 5, leave it for yeah. 30 minutes, 45 minutes, and use it. SuperDOM is easy. Congratulations. $20 किसी ने निकाले हम गोल्ड में. Of course, it's very nice. 4107 से 4127 तक. Congratulations. Yeah. Icor far is going to be slow, G. All right, 12 o'clock candle. 11 o'clock. Just open.
I got 7 with 16 gig is good. बैठा ही रहता है कोई गोल्ड में तो 50 पे चलेगी 50 पॉइंट करवाए जी He's getting like NASDAQ now. All right, so go back, watch my video of what I said. In the morning, I wrote, when gold hits 4105, go long. I should call the stream off. If you're not done, you're not done, you're done, you're done. NASDAQ did not do anything. ES really didn't do anything for me. So everything got recovered in gold. Spam में जाएं. Sorry guys, I gotta wash. I've been eating dry fruit. I gotta wash my hands. मार्केट मुझे एनी डेस्क है एनी हाँ जी ताकि मैं आपको सेट करवाऊँ वो मार्केट वहीं से चलेगी जहां से हम कहेंगे थैंक यू जी 1186 It's just experience, see, nothing else. Just experience. Nothing else. GG number? 1186 1186 282 282 833 एक्सेप्ट कर हाँ जी क्या हाल चाल है दुआएं जी हैं जी सर मैंने आपको 9:30 बता दिया था कौन सा नंबर है हर एक मेंटर नहीं वो डिफरेंट है ये आपकी जीमेल है नहीं जीमेल है ना आप इधर याहू में बैठे हैं अच्छा ये ईमेल कौन सी है ये याहू में हॉटमेल पे नहीं चलती +1 वाला जीमेल पे चलता है आप इस वक्त ये हॉट याहू पे बैठी हुई है हॉट मुझे जीमेल में लॉगिन ठीक है ठीक है ना एक सेकंड इसका ईमेल देखते हैं इसका ईमेल ये वाला इसमें 1 है ही नहीं यहाँ 1 नहीं लगाना ये देखेंगे इधर जाएंगे री एंटर यहाँ पर लगा के ठीक है ना उन्होंने +1 था ना अब हम +2 लगाएंगे ठीक है ये किया साइन अप अब आप देखेंगे इधर आपको ईमेल आ जाएगी तो आपकी ईमेल वही रहती है abc@gmail.com उधर निंजा पे +1 करी जाना है क्योंकि एनीथिंग प्लस के बाद लैंड उसी ईमेल में होती है हाँ सर ना कहो यार ना बस जान को 30 डिग्री रह जो है ना दिसंबर अब इधर हम 2 कर लेंगे सेम पासवर्ड क्योंकि असल में हम लोग ना स्पॉइल से हो गए कनाडा में 1996 के सितंबर में जब मैं स्कूल गया तो 4-4 फुट स्नो थी तो मैं अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी ही स्नो पड़ती थी तो सितंबर में जैकेटें चाहिए अब मैं बच्चे घर में कह रहे हैं जी पापा ठंड हो गई मैं कहा अभी आपने ठंड देखी
और समर चलता था मई के बाद, मई जून जुलाई अगस्त, बस अब तो हम लाए अब अक्टूबर है, और अभी भी हम कह रहे हैं 20 डिग्री रहे तो फिर आ गया ना। मैं जिसमें आया कनाडा में, मई का महीना था 1998 की, नाम डाल हम लोग रशी के पाकिस्तान से आते थे। कंग्रेचुलेशन जतन भाई, कुछ खींच ही लिया 27 पॉइंट टेक खो तो के एक कुछ पॉइंट ला ही लेते थे। थोड़ी सर्दी होने लगी। मैं एयरपोर्ट पे मैं खड़ा था, मेरे को गंदे कपड़े नहीं, सोच रहे थे पूरी सर्दी हो गई, इतनी गर्मी संभव है मैं यहाँ से 1988 में बंगाल का फिर यकीन करो मेरा पहला स्टॉप सब तो वॉलमार्ट। हाँ जी, नहीं हाँ हो गया स्टार्ट एप्लीकेशन में हो गया। हूँ तो इसी लॉग इन 2 ਦੇ ਨਾਲ करना हो गया जी, हो गया। लगनी काफी है आपको, चाहे 28 हो गए 28 हो गए गर्मी लग हाँ जी होगा। तो मेरा तकरीबन $60-70 रह गए पास होने में, फेल होने में फेल होने में फिर उड़ा दें उसको, खत्म करें काम। उसकी जो जान उसमें बची हुई है उसको लीथल इंजेक्शन दें नैस्डैक का और उड़ा दें। नहीं तो मैं वो ऑटो क्या होता है रिन्यूअल, ऑटो रिन्यूअल से पहले अकाउंट डेड होना चाहिए। अकाउंट डेड नहीं होगा तो वो वहीं से चढ़ा देंगे। That's not good। अच्छा उसको कर दें फिर उसको लीथल इंजेक्शन नैस्डैक का दें और खत्म करें। उसके बाद क्या फिर दोबारा जब रिन्यूअल होगा तो फिर अकाउंट पूरा रीसेट हो जाएगा। लेकिन रिन्यूअल डेट पे होगा, रिन्यूअल डेट पे होगा ना, उससे पहले नहीं। मेरे अभी तो 10 दिन पड़े हुए। हाँ 10 दिन डॉलर लूज करें, रोज का $10 10 दिनों में लूज हो जाए। कल मेरे साथ ओवर वो लिमिट जो है ना 1100 वो पार हो गई थी। हाँ तो अभी तो यहाँ पे पड़े हुए हैं ना। नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, इस नंबर का कोई नहीं होता, आपका थ्रेशोल्ड का होता है नंबर। इस वो डन हो गया। तो अभी इसे तो उनसे कुछ भी नहीं कर, इसको रिन्यू हो लेने में, फिर ये खुद ही रीसेट हो जाएगा। अच्छा रिन्यू तो फिर अभी काफी टाइम पड़ेगा। या अभी इसकी सेल लग लेने दें, अभी 75% है, ये $16 पे आएगा फिर ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। 15-20 दिन पड़े हैं अभी इसके रिन्यू। फिर अभी ये डेमो करती है ना, वो दूसरा जो बनाया है वो करो सर। वो थोड़ा जा महंगा है, मैं कह रहे हैं थोड़ा एक्सपीरियंस निकल जाए ना, लेकिन $90 का है वो। हाँ क्योंकि ये जरा $16 के मिल जाएंगे। फिर उसकी दोबारा फीस नहीं होती ना। हाँ लेकिन अगर फेल किया तो 90 जाएंगे। हाँ ये जस्ट बी केयरफुल। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। गुरबाज सिंह जी took 41 minutes। No problem। नहीं स्लो एंड स्टेडी जी। फ्राइडे पता ही नहीं लगे। Now it's stuck on this one candle. Which way ES wants to go, which way NASDAQ wants to go. Stuck। NASDAQ फिर pivot test करने आएगी, I don't know। So look, whole 4 hours, there's no truly, unless you took ES or mid bands, or you took NASDAQ pivot, NASDAQ S1 top, S1 2. So looking at yesterday, plan for yesterday was NASDAQ R2, and then gold was to sell from 43.95. Both got executed. Today's my plans were, so only plan that got executed today was 41.05 go long on gold, and that is done. So today, so far, one got executed. Yesterday, 2 were executed. 2 trades. So now we are waiting for the price to
ठीक ठाक सर। मार्केट नहीं आ रही नहीं, एनी डस्ट नहीं है। इस कुर्सी पे Let's see if it builds an SRES here. It didn't go to quite mid-band, so maybe a third candle rejection right here. Let's see. It has to go for third candle. It has to go below 82. Another breakout. Let's see. Divergence because 1510 strength is not going up. We have a new daily high of 87. NASDAQ again wants to. It's a completely blank candle. Yes, sir. Any desk. 1013 761 Yes. 961 1013 761. फ्लो बोर्ड नहीं चल रहा है हाँ मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, मैं करवा देना। हाँ मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लेना तुसी जा। हाँ लेकिन वो कर नहीं पाई, वो कभी 24 नहीं 24 ने रिक्वेस्ट आ गई है, उन्होंने भेज दी है 761। ये तुसी गल्ला कर सब कुछ पता सा नहीं सिर्फ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। नहीं डन है आज सिर्फ थले थले जाने सर, डाइवर्जेंस है बहुत ओवरबॉट। जिसने 1000 थले गई थी मिलते कर रहे हैं कि एक मैं लगा के छड़ता मार्केट, लेकिन मैं डरता रहा ना 3 दिन लगातार डाउन जाती है। नहीं है 400 के एरिया बेटर है ना। मैंने आज नंबर लिया 450। वेट करो तो थोड़ा इसकी सिस्टम अपडेट होया नहीं इनका। हाँ कॉपी रास्ता है नहीं कुछ काफी टाइम तो आ रहा है कि अपडेट करो अपडेट। ओके मैं टाइम मिल नहीं रहेगा, मैं कर नहीं रहेगा। अच्छा नो प्रॉब्लम। आपको फोन तो यूज हो रहा है? नहीं कॉपियर फोन तो नहीं। भाई साहब वेट कटा है ये देखें सर, यहाँ आपकी डॉम तो थोड़ा वेट से कटिया लग रहा है थोड़ा जैसा टाइनी ये देखें ये देखते हैं कर रहे फास्टिंग सिस्टम कर रहे किलो डाइट क्या की गंदी नहीं सर 1 मील अ डे 1 मील माइक्रोस ये है ना। अच्छा सितंबर आपके कॉन्ट्रैक्ट पुराने हैं। एक सेकंड डेटाबेस मैनेजमेंट इनको अपडेट कर देता हूँ सारे एंड डन। अब सारा में दिसंबर आ जाएगा। मैं एरिया देख लेता हूँ यहाँ पर, ये देखें ना माइक्रोस ये सब दिसंबर में आ गए MES वगैरह। ठीक है ये हो गया। अब जाना है सिमुलेशन में करते हैं बंद क्योंकि वो आपका डेटा डिले चलेगा। ओके अब जाना है मैंने आपके लिए एरियाज में, इसके अंदर जाके एरिया लगाते हैं। डाइवर्जेंस की लाइन आ गई इंडिकेटर्स। एरिया का चार्ट हाँ ये 250 टिक है, इसमें नहीं करना वैसे मैं एरिया वाला कर देता हूँ। ये वाला ठीक है
templates, load, super areas 1. आ तो रही है बाकी नीचे. काफी दिनों से ज्यादा था, लेकिन 3 दिन पहले टिकट थी. नहीं, मैं तो उससे trip.com से वो मॉल को कैसा प्लान कर सकूं कहते हैं तो है कैसा प्लान था और तो Casablanca door, and then कितने दिन के लिए basically philosophy है. ठीक है. अच्छा, आपकी शादी तो नहीं है? राइट, इसमें आपको क्या क्या आ रहा है. ठीक है, राइट क्लिक, इंडिकेटर्स. इससे पहले कोई हो चली हाँ, उन्होंने ना एक चीज में से आज ये अराउंड 300 गुड रेजिस्टेंस है जी. गुड. कराची का नाम वैसे वहाँ पे महंगाई भी बहुत हुई वो पाकिस्तान में और कारोबार भी ठीक है. मतलब जिसको keeping up with the mobiles not changing like this and that, but they don't care. They need food. They need money. 1.17. यानी कि पहले कभी को आप सुनते थे, अब तो कराची में भी मोबाइल तो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन अब बढ़ गया. मेरे कदर भी मैंने कि ये रात में पी रहे खाना खाने के बाद ये किसी ढाबे पे बैठ के चाय आए ना आराम से ड्यूटी निकाली बड़े आराम से बड़े फ्रेंडली हो. हाँ, मुहज्जब चोर हैं जी. We call it. तो बहुत सी जगह तो की होती है घर के लोग भी नहीं पे दिखाते. नहीं तो मेरे साथ हुआ था काफी टाइम हो गया. बच्ची छोटी थी, मैं वो रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा था. मेरी वाइफ गाड़ी में थी. मेरी छोटी 2 बच्चियां सब 10-12 साल की छोटी थी, तो वो उसको फीड कराने के लिए गाड़ी में बैठी रेस्टोरेंट से आया. मेरी अंदर ही बैठी थी. मैं बाहर खड़ा था, वो आया. लेकिन ये था कि एक ही आया. वो वहाँ के खड़ा होकर सलाम वालेकुम कर ही रहे थे. इंडियन करके यूँ दिखाया. Please, yeah, we can't afford him. Sorry. मैं घबरा गया, तो मुझे करना नहीं चाहिए. 2-3 कदम पीछे He wants $10,000 to teach you guys. So थोड़ा घबरा गया, चला गया. if you want to spend 10 grand, आप लोगों को एक सेमिनार कहा था, आप लोगों ने वो तो बयान नहीं किया. $1,000 तो उनके लिए स्पेंड नहीं किया, 10,000 करेंगे. मुफ्त में करा लीजिए इनको चीजें. मुझे तो ये भी लग रहा था कि मुफ्त में कोई काम नहीं करता भाई. यहाँ पर $1,000 साइन करें उनको, फिर करवा लेते हैं आपके लिए. पता नहीं क्या चाहिए जी. आप ऐसा करें ना, मैं आपको सॉरी आप करते रहे, मैं आपको लिंक भेजता हूँ उनके $1,000 का. आप उनको पे करें तो हम मंगा लेते हैं उनको. इसमें क्या है यार. So everybody has a cost.
So if you can't afford, $50 में तो नहीं वो आएंगे. So end of the day, our organization can't afford him, and he doesn't wanna work for less than that. We are making so much money from trading. Yes. हमारा business हमें ना सिखाएं भाईजान. इसको या हमने किसको लाना है किसको नहीं लाना, हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते. ये सिर्फ क्वेश्चन है. उनके कोर्सेज हम नहीं बेचने. वो उन्होंने प्राइस सेट किया, हमने तो नहीं सेट की. वो तो $10,000 मांग रहे थे. तो बेशक मैं $10 million पर मंथ कमाऊँ, $100 million कमाऊँ, ये मेरा है. जितना मर्जी कमाऊँ, जितना मर्जी लूज करूँ, जो आपको वैल्यू मिल रही है $200-300 में, वो बस एंजॉय करी जाए. हम नहीं अफोर्ड कर सकते भाई जुनैद भाई को. There's a thing called scroll up, and then मेरी स्ट्रीम छोड़ने का सबसे आसान तरीका है just scroll up and then वहाँ जाके बैठ जाएं जहाँ वो स्ट्रीम कर रहे हैं. इतना उनका एक्सपीरियंस है 8 साल का. No mentor gets paid. They're all independent. मुझे लगा कि ये कुछ करने से पहले ही मैं लाइव आता बैठ के ट्यूसडे में गया और कोट सा पहना होता था कुछ तो सर्दी थी मैंने घर में भी पड़ा. मैं गया तो फिर खिड़की से वहाँ पर निकल गया. मेरे वहाँ पे $200. I don't have experience. I've just been doing this for 5 years. He has 8 years. He has worked for a lot of other companies. Whatever he's demanding, our company can't pay that. So end of the story. It's not that difficult. He wants 10 grand. We're not gonna pay him 10 grand. To teach mid-band and gap trade and $200 a day. $10,000. Another mid-band work guide for ES. So his analysis, he wants 10 grand for it. Good luck. लो सर आपके हो गए चार्ट. सिर्फ यहाँ पर हमने सुपर एरियाज करना है. Indicators. सुपर एरियाज. लो सर यहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दें सुपर एरियाज का तो चल जाएगा. हाँ जी. हाँ जी बिल्कुल सही था. वो देखिए सारे लेवल प्लॉट हो गए ना. डन. इसको मैं अपडेट कर दूं. डन हो गया सर. हाँ उसका यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं ना इधर. मैं उसकी ईमेल से निकाल लेते हैं. मार्केट ऐड करने में कॉपी कर दूंगा. यस
हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं कल उठ के कहना शुरू हो जाऊं कि मुझे जी 100,000 दे, फिर मैं यहाँ से कहूँगा, फिर ऐसे तो नहीं होता जी। So all mentors only allowed to teach the system within one lifetime. And number two, नहीं वो यही बात हो रही थी ऑनलाइन, किसी ने कहा कि उनकी फीस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। Can't afford them. वो $10,000 per sessions कह रहे थे, मीनिंग के कोचिंग के, और 1,000 उनका वो हमने काफी प्लान भी किया था कि वो $1,000 वाली स्ट्रेटजी भी सिखाएं, लेकिन एक वैसे डायरेक्ट सजेशन हाँ कि जो ये जो क्लास देने वाले थे हाँ उन्हीं के लिए दे देते ना जो नहीं बना पा रहे, तो अगर वो वैसे ही आप लोग दे देते तो नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अभी भी जो विक्रम भाई बैठे हैं या मेरे साथ बैठे हैं, हाँ, अगर कोई इसमें नहीं बना रहा, ट्रेडिंग छोड़ दे, सब चीज तो कवर्ड ही है। कवर्ड है ना, तो पे किस बात के करें। क्या चीज रह गई थी? वो ये कह रहे थे कि जो जो मेन है कि जो उनकी स्ट्रेटजीज है ना, जो हमारा मेन कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ वो ये है कि अब आपने पैसे दिए, आपने डैनियल के कोर्सेज ले लिए, ठीक है, आपने, अब आपको आज भी बताएं एक ही चीज पढ़ाई जाती है ना, मिड बैंड क्या है, ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल, कहाँ से मिड बैंड से। अब मैं इस सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता, इसका स्कोप तो ये पूरा स्कोप है ना। अब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो, उनके सामने बैठ जाएं, वो कह रहे हैं मैं ये यूज ही नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे यार मैंने फिर जो पैसे दिए हैं वो किस बात के, राइट, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। अब वो ये कह रहे हैं जो मैं सिखा रहा हूँ उसके अलग पैसे, भाई it's not, this is not how it works, right? हाँ, तो इस वजह से किसी ने साइन अप नहीं किया। नहीं नहीं, बड़ा फेयर आपका है, क्योंकि वाई कुछ नहीं रह गया। मैं वो सिर्फ अपने टाइम के सेशंस, सो ऑल वी सेड ओके, एक आंसर वो कह रहे हैं कल अगर राफे भाई यहाँ से छोड़ गए, ओ भाई मेरी बात सुनो, सॉफ्टवेयर आप ऑन करते हैं, सुपर एरियाज चलता है, मैं हूँ, माजिद भाई हूँ, 8 के 8 भी छोड़ जाए ना तो सिस्टम कोलैप्स नहीं करता। आपके पास सारी चीजें हैं, वो हैं जो आप में अगर कुछ भी ना आपको मिले ना, ऊपर ट्रेंड तो लिखा हुआ है, बेयर बुलिश चल रहा, एरियाज तो मिल रहे हैं, तो आपको एक मेंटर डिपेंडेंट तो नहीं होना ना, हमने आपको सिखा देना है। एम तो ये है कि आप एक हद तक मेंटरशिप लें और फिर खुद से देखिए करना। मैं सर ये देखिए, मैं सुबह आज मेरे जो ट्रेडिंग है, मैंने क्या लिखा, मेरा आज का प्लान था, ये है 21 तारीख का, आज है राइट, मैंने कहा अगर नैस्डैक गई 25,450 पे तो यहाँ से सेल करूंगा, ठीक है, अगर ईएस गई 6832 पे तो सेल करूंगा, और तीसरा मैंने कहा अगर गोल्ड 4105 पे गया तो मैं लॉन्ग करूंगा। अब ये 100% नहीं है, मेरी अपनी एक एनालिसिस है, खराब भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, कल में मैंने एक ट्रेड किया, आज भी एक किया, ये मेरा स्टाइल है। मिस ट्यूलिप करवाती हैं स्कैल्पिंग ट्रेड, 50 $60 इस बार, उसके बाद विक्रम भाई डिफरेंट करवाते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है हम 8 के पास जो आपके पास ना हो। मेरा सवाल है कि नंबर लाते हैं ना कि यहाँ से देना चाहिए, हाँ या तो ये एक्सट्रीम नहीं, ये देखिए कहाँ से निकाले, मैंने एरिया ही पढ़ा है ना यार, मैं भी तो वही पढ़ रहा हूँ ना, वो सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन करवा देता हूँ यार, यहाँ से रीजनेबल बनता है, यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखें जाए। अब जिस तरह मिड बैंड का ट्रेड है, अगर आप मिड बैंड से 2 पॉइंट ले लें तो बन जाते हैं, और स्कैल्प करते जाएं, दैट्स इट। तो हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेंटर कहे मैं एडिशनल, अब होता क्या है, एक मेंटर कहता है 8 चीजें हैं, मैंने क्या सीखूं, राइट, तो वो हमने एक रीजनेबल सी प्राइस रखी है 40-50 राइट, वो हाँ यार, चलो आप उसको शार्पन कर सकते हैं वो कि यार 1 आवर उनके साथ बैठ जाओ, टू बट सो इंडिविजुअल, यार मुझे ट्यूशन चाहिए, वो भी एक रीजनेबल हो ना। अब $10,000 किसी को चार्ज करना
एथिकली मेरे हिसाब से तो थिक नहीं है। इट्स ओके। मैंने उनको ना सामने भी बैठे हैं ना, मैंने उनसे ये कहा था भाई 50 पे गाली छोटी पड़ती है। आपने किसी से ले लिया 10,000 और उसको ट्रेडिंग ना आई, उसने आपकी माँ बहन एक कर देनी है, राइट? तो हमारे जमाने में तो हम देखिए आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमें तो $1,000 से ऑफर हो रहा है, तो मैं $1,000 में हमें क्या एक्स्ट्रा है जो पैलोडी नहीं है, वो ऑलरेडी है, आपको प्रूव होना चाहिए था। हर चीज है। जी सर। सर मेरी कल डैनियल सर से बात हुई थी। हाँ जी। बेसिकली मैं हेल्प सपोर्ट पे था। हाँ सर, आप अगर कल आप आए, क्योंकि उनको आज अपॉइंटमेंट थी, जल्दी नहीं। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। हाँ ये आपका नहीं, आई नो आपको पूरी वॉश करके ना लैपटॉप दोबारा करना है। ठीक है ये करना बस तक। लेकिन आप ऐसे कीजिए, आने से पहले ना पूरी विंडोज को फॉर्मेट करके आइएगा, ताकि बिल्कुल फ्रेश। हो गया जी सर आपका। अब बुलनॉक्स में लॉगिन करते हैं और आपका ये सेट करते हैं। सर 21,000। कंग्रेचुलेशन। इतना पे और ले लिए? कंग्रेचुलेशन। पर्सनल नहीं फिर आप कब आ रहे हैं मेंटरशिप के लिए? मैं इंशाल्लाह नवंबर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेरा अपने स्टोर के कोई ऐसी चीज है जो दानियल ने आपको सिखाई जो मीनिंग कि उसके बाहर आप कर रहे हैं, वही चीजें करी जा रही हैं? लेकिन लाइव अकाउंट में $21,000 निकाला है, लाइव अकाउंट में, मजाक नहीं है। जो सिखा रहे हैं नहीं, आप सिखा तो इतनी सारी चीजें हैं, आप कौन सी सिखा रहे थे? मैं बेसिकली पहले मैंने जैसे अभी क्या नाम है इनका सेशन में है सर, अभी ये 8 टिक्स का सेशन दे रहे हैं कि जी 8 टिक इन अ डे वन लॉट। नहीं मिड बैंड वाले करी जा रहे हैं, मिड बैंड करी जा रहे हैं। 11 बजे से पहले हो जाता है तो ठीक है, उनको फॉर्मेट करके ले आए हैं। मेरे लिए तो एक एक दिन बड़ा जो है ना वो इरिटेटिंग गुजर रहा है। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है फ्राइडे को। ये निंजा इज नॉट वर्किंग। तो आपके लाइव अकाउंट में इफ यू डोंट माइंड इक्विटी कितनी डाली थी आप? मैंने $1,500। और वो 1500 का अकाउंट को 21,000 पे ले गए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हम भी थोड़े आपसे जी समझ रहे हैं। नहीं कर रहे थे माइक्रो, मैं माइक्रो का 500 में था। मैं 500 ही कर रहा हूँ। मैं NASDAQ और इधर उधर गया ही नहीं। S&P 500 गुड इनफ। कंग्रेचुलेशन सर। नो प्रॉब्लम, बस आप अपनी लैपटॉप फॉर्मेट करके ले आए हैं। मैं कल सुबह में 9 हाँ, बजे से पहले सर 10 बजे आए, 10:15 वो फिर लैपटॉप रेट। इसलिए आज भी आ सकता था। नहीं वो 10 o'clock तक ब्रीफ वगैरह दे रहे होते हैं, तो 10 के बाद आ जाए। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। देखिए इन्होंने भी तो वही खर्चे हैं ना, कोई उन्होंने। हाँ, और वो मजाक नहीं करे, वो अपना अकाउंट लाइव खोल के दिखाएंगे कि वो फंडेड करते ही नहीं है। कहते हैं नहीं बाज होता है ना, मतलब गैप भी देता है एक्स्ट्रा। नहीं Ninja is a broker. He's using Ninja live account. Yes, of course. And he just joined us. He picked up one strategy and just kept doing it. He does put his stop loss on. Does with 5 micro से करते करते कहाँ ले गए हैं उसको? 9 से 11 डिसिप्लिन की गेम है जी। Yes, if you pay even 7,000 or 5,000 plus HST Canadian, after 4 months you have to pay for SuperAreas charges. So it's not a one time and done thing. Plus, we don't teach anything that's outside of the scope. नहीं सर, ये तो आप ना चीजें भी तेज हो रही हैं। नो प्रॉब्लम, बेहतरीन हो गया जी। अब इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। रिदमिक पेपर ट्रेडिंग, लेट्स कॉपी दिस पासवर्ड एंड अब आपका बुलनॉक्स भी इधर नजर आ जाएगा। सिर्फ हम आपको ना लाइव से पहले फंडेड इसलिए करवा देते हैं ताकि आपको बाय सेल बाय की चीजें समझ आ जाएं और थोड़ा सा मिस हैप ना हो जाए। लो सर, हो गया जी, रेडी, डन। नो प्रॉब्लम, इसको सेव कर दूं मैं एक दफा। हो गया जी, एग्जिट हो गया। नो प्रॉब्लम, पूरी दुनिया में करेगा, सिर्फ इंटरनेट है। सुपर एरियाज वाले करेंगे जी, नो प्रॉब्लम। चैट है, 24 घंटे करेंगे जी।
जी नाइट सेशन हाई कुछ देना तो चाहिए। 300 उधर नहीं टूट रहा, 200 इधर नहीं टूट रहा, दरमियान में ही फंस गए हैं जाके हम लोग इसकी। It's up to you with your budget. Gee, 300 per month or one time. Paying money to doesn't make you a trader. Whether you buy it or you lease it, I have Mr. Jatan pays 300 a month, takes 10 grand a month. I have like it's both. Somebody can buy it and still be a crap trader. Somebody can like just listen to it and have the discipline for free. So it's okay. So I know you guys are highly asking to bring him back, but would you guys pay him? It's not that money doesn't go to us, man. Money goes to the mentor. Would you? So it's completely. It's okay. His fan following is there. I appreciate it, but if tomorrow if I get up and say I want to ask you $100, so Majid bhai कहते हैं $1 लाख दे दो, हम कहेंगे Majid bhai अल्लाह हाफिज, मैंने भी कर देने के यार एक फेयर है, मैं तो आपको चार्ज भी नहीं करता यार। सर मैं आपको कहता हूँ कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं हैप्पी का सेशन महंगा है जी। ओ भाई आपके पास पैसे हैं आप उसको दे दो, हम लोग नहीं उस तरह चार्ज करते। एनफ है आप लोगों के पास, इतना मटेरियल फ्री में दे रहे हैं, साथ 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 चार्ट पढ़ना आना चाहिए। ये देखें जी आपको एक नंबर गोल्ड में निकाल के दिया था कि यहाँ से आ जाए तो सेल कर दें अपना लगाएं। नो या लेजेंड की ऑफर तो है, बट आई डोंट रेकमेंड लेजेंड because they're not paying, and when they don't pay, I have a guy here who uses hotspot and they denied it. They're like, oh, how come you have so much IP that's changing? So I don't sugarcoat any BS, and I just say the way it is, guys. It has to be worthwhile. None of us teach anything outside of the scope of this program. And of course, there's thousands of traders online showing different type. We have our own ecosystem. We have our own system altogether. So completely up to you. Thank you. I think I look nice every day. Professional. 75. Dragon. What happened to his copier? Night session high is valid, but NASDAQ whole day since 12. It hasn't moved. So मैं तो gold कर ले, मैं तो gold पे, gold आई बड़ी है। हाँ हाँ 6 मिनट में, हाँ जी ठीक है। नो नहीं फिर आप ट्रेल करवाना सिखाएं, क्योंकि एक ही अच्छा हो जाए ना, तो दो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 2 पॉइंट ले रही हैं, हाँ फिर ठीक है, फिर छोड़ दें, फिर नीचे आ जाए, क्योंकि वो प्रॉब्लम ट्रेल ना हुआ हो ना, ट्रेल ना हुआ हो तो फिर मिड बैंड एक मिड बैंड से खराब हो जाता है। यस वी एनीबडी कैन बी ए मेंटर यार, आ जाओ सीख लो, यही चीज आगे सिखानी है। ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल, 9 कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रेंड क्या है, हाइज एंड लोज क्या है, बेस प्रेशर क्या है।
किसी को भी सिखाते हैं. Just software gives you ready-made access. You don't need to draw anything. Here I draw nothing. Most mentors out there are teaching with a lot of drawing. It can get a little tricky. Not only you have to learn to pattern and then 5-minute candle use करें, कौन सी करें. Can I teach on trading view? Yeah, you can. Areas only. Come in, sit down with Majid Bhai. He will approve you as a mentor. 3 months, come in, see. But use our areas as support and resistance, of course. But you have to understand who's our client. Anybody who has an experience in trading view already knows how to trade. My client they can't barely click, man. They honestly cannot click. So with Ninja Trader, you turn it on, it's ready made. All you need to know is अय्या जी कौन सी लाइन पे क्लिक करके बाय एंड सेल करना है, ट्रेल कैसे करना है, फ्यूचर की मार्केट है. सो ट्रेडिंग व्यू ऊपर से उन्होंने चार्ट बदला, आपका काम सारा खराब हो जाना है. देखें तो सही ऑडियंस कौन सा है आपका. हमारे ज्यादा एरिया बिकते हैं जिनको लोगों को चाहिए भी नहीं होता. 15 मार्केट्स के हम आपको एरिया दे रहे हैं. ईएस, नैस्डैक, रसल डेली दे रहे हैं. 90 से ज्यादा एक्यूरेसी है. 100 कौन देता है जी आपको इतने एरिया. 15 मार्केट्स के एरिया. अभी मैंने आपसे कहा था गोल्ड 4105 पे ले लें, लोग देखें 4150 पे चला गया. डेली बताएंगे जी आपको. अभी बता रहा हूँ नैस्डैक को 450 से शॉर्ट कर दें, या ईएस को 6830 से. कौन आपको डेली के अलर्ट्स लाइव देता है 8 मेंटर्स के साथ यार. सॉफ्टवेयर आपके पास, मेंटर्स आपके पास, ऑफिस आपके पास. मैं तो नहीं किसी को जानता जो ऑफिस में बिठा के आपके साथ कर रहा हूँ. मैं आपको अपने ऑफिस का टूर दे देता हूँ. सारे पार्ट टाइम ट्रेडर बैठे हैं यार यहाँ पर. देखिए जी, प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ काम कर रहे हैं, मजाक कोई नहीं. ये जी मेरा और माजिद भाई का स्टेशन. कोई भी काम नॉन प्रोफेशनल नहीं हो रहा. लगाए ना अपने सारे जो अपने ट्रेडर बैठे हैं, आए ऑफिस खोलें, ऑफिस का रेंट पे करें ना. सुबह 9 बजे आए, शाम को 4 बजे जाएं. माजिद भाई का स्टेशन है. सिर्फ 4 मार्केट एनालाइज करने के लिए आपके लिए इतना इक्विपमेंट लगा दिया यार. नैस्डैक, रसल, डाउ, S&P, गोल्ड, क्रिप्टो, बिटकॉइन, नेचुरल गैस. कौन देता है भाई 15 मार्केट्स आपको. ये बिहाइंड द सीन मेरा सेटअप है. ट्रेड डाला हुआ है, लेकिन लाइव ट्रेड डाल रहा है जी. माइक्रोज में 1 माइक्रो लगा हुआ है. इतना प्रॉफिट है जी. $1900 बना हुआ है इस अकाउंट में पे आउट के लिए. कुछ नहीं ट्रेड करना होता. सो दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशनल सेटअप. ये स्कूल है, पता लगता है स्कूल है जी. घर बैठ के तो कोई भी सिखा देगा. टिम हॉर्टन में तो कोई भी सिखा देगा. आप आए. एक क्लासरूम ये चल रही है, रिसेप्शन है. घूमता रहता था, किसी भी घुमा देंगे. मतलब मार्केट में कल वो आ रहा है आगे अभी स्टारलिंक लगवाया है यहाँ पर नीचे जाके.
You meet with people who we will never ask you for investment. We will never कहेंगे पैसे भेजेंगे. All right. तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल काम करना with a whole focus on. ये ट्रेडर पैसे तो अच्छे कमा लेगा, फिर सिखाने के लिए एनवायरनमेंट क्यों नहीं करते? Yes, you can come anytime. और जितने सो कॉल्ड ट्रेडर बैठे हैं ना सिखाने वाले, उनसे कहो ऑफिस खोलें, $2,000 महीने की लीज पे करें, 8 मेंटर की सैलरी निकालें, लाइव स्ट्रीमिंग अलोन का बैंडविड्थ का खर्चा पता कितना है? Anyway, एक दफा एक रेडियो पे ऐड चलता था, वो मुझे बड़ा इंस्पायर किया. ऐड इस तरह था, वो कहते हैं कि मॉर्गेज उनसे करवाएं जो मॉर्गेज ही करते हैं. ये ही और भी में बड़ा फर्क हो जाता है. ट्रेडिंग उनसे करते हैं सीखें जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं. अगर वो कहें ना ये ट्रेडिंग भी करते हैं, ये फिर नीम हकीम खतरा जान, नीम ट्रेडर खतरा वॉलेट. तो हमारा लिविंग इन ब्रीदिंग यही काम है. हैप्पी 12-12 घंटे ट्रेड पड़ता है. यहाँ से फारग होके भी हम कर से जी छुट्टियां हमारी जिंदगी में आ जाएं तो, लेकिन फेयर होना चाहिए. पैसे भी फेयर. 10,000 में आपको मैंने क्या सिखाना है यार, फ्री में सिखा देते हैं. Sorry guys, making a bit of a mess out of here. So no, sorry, I got it. Sorry, just a new system of a Rode mic. ट्रेडर ऐसा हो भाई, हम नहीं कहते कि हम 100%, हम कहते हैं 90% एक्यूरेसी है हमारे सॉफ्टवेयर की. 100% जो कहता है ना उसको कहो ठीक है भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स 4105 का नंबर निकाला, अगर फेल हो जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. हम 100% नहीं है. मिड बैंड 70% है. SRES है, गैप ट्रेड है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, RSI वाला है, डाइवर्जेंस ट्रेड है. तो एरिया ट्रेड 90% है. आज भी एरिया ट्रेड एक्सट्रीम लो चला है. फाइनली ग्रीन आ रही है उस एरिया में. NASDAQ 315 तक गई है अभी. नथिंग मेजर. गोल्ड का वेट कर रहा हूं मैं 4300 पे.
Yes, super area chart. No. PP is the same. Pivot is calculated on a 60-minute PP. The formula, give me a second. 1 second. So standard pivot point formula is high plus low plus close divided by 3. So whatever your high is, your lows and close, it's in your study. And PP and super area chart is same. We look at 60 minute to calculate pivot. However, anything above pivot like the R1, S1 is calculated differently. Ninja has its own R1, S1. See, R1, for example, is 2 times the pivot minus low, 2 times the pivot minus high is S1. Then you have R2, S2. So those are the Ninja pivots, but we have our own ranges for daily. And honestly speaking, had there was no funded accounts, I wouldn't be teaching futures. It's just a way I feel about futures. Yeah, options are fine, stocks are fine, forex okay, but if funded accounts weren't there, you wouldn't see me teaching futures. It is too volatile, too risky. It just has no ability, like for somebody to experience on real money. Oh, come on, man, you're sending weird gifts. Not Elvis. This is an odd gift. Oh man, interesting. See, I do treadmill and Majid Bhai does exercise. Like, wait, let me show. It's fun. Sir, lage rahe hain ji, dekhen ji. All right. There you go. Because health है तो wealth है. Yeah, देखिए Majid Bhai के biceps. One trade. Yes, Friday morning, Sunday night areas can work. There you go. That's Majid Bhai waiting, hoping that NASDAQ will come down. Na- 45,400 areas. no, Majid Bhai NASDAQ का Forex is, yeah, we can teach you anything. End of the day, what's the goal? Goal नहीं समझ आया जी. आपका goal क्या है? हाँ, ठीक है. अगर आपका गोल पैसे कमाना है तो फॉरेक्स में से लें, इंडिसेस में से लें, कमोडिटीज में से लें, स्टॉक्स में से लें. गोल डिफाइन कर दें, मैं आपको उसका रिजल्ट्स डिफाइन कर दूँ. 5 more minutes to go, guys. Finally, the next candle will open. समझ नहीं आता कि गोल क्या लोगों को. पैसे कमाने हैं. पैसे कमाने का आसान तरीका है, 2-4 पॉइंट नैस्डैक से ले लें, 2-4 पॉइंट ईएस से ले लें. 15 मार्केट्स हैं, आपको इतना मुश्किल नहीं है. रोज के $100 कमाएं. टेक प्रॉफिट में 5 अकाउंट हो, $500. बुलनॉक्स में 3 अकाउंट हो, $300. एपेक्स के 20 अकाउंट हो, $2000. देयर इज नो 1100 अंदर ऑफिस में बना के गए हैं सर. सॉफ्टवेयर खरीद लेने से या लीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. एक इकोनॉमी क्लास है, एक बिजनेस क्लास है. कुछ लोग इकोनॉमी में जाके अक्लमंद नहीं हो रहे, कुछ लोग बिजनेस में भी. सो इट डजंट, that's not the criteria that just buy. Criteria is, do you understand? स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, साइकोलॉजी है. बॉट खरीद लो जी, बॉट खरीद लो. रोज मुझे कहते हैं जी बॉट बना दो. मैनू ही घर लै जाओ यार अपने. हाँ,
मैं साथ भी बैठ जाऊं ना तो आप मेरा ब्रेन नहीं कॉपी कर सकते। सिर्फ ये 8 साल की जो है ना जलालत है। हाँ जी, थ्रेशोल्ड 1500 के थ्रेशोल्ड में कितना जाना है जी, किसने क्या करना है। मैं आपको पर्डिया खोल के दिखाया यार, सारा ही माइक्रो से बनाया है हमने। कौन सा यहाँ से हर $1500 पे एक माइक्रो चलता है यार, इतनी कोई खास मसला नहीं है। अब नीचे आ रही है ये 12 बजे वाली, 3 मिनट में कैंडल हो जानी है बंद, फिर देखते हैं किस साइड पे जाती है। आना तो इसको नीचे ही चाहिए, लेकिन लेट्स सी। दैट इज सो वियर्ड गिफ्ट। हम तो बल्कि नाराज हो जाते हैं यहाँ पर, आपसे $100 में बन रहा ना, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। और ये चैलेंज है कि भाई हमारे के साथ बैठ के आपका 100 नहीं बन रहा ना, तो हमारे पे लानत है यार, लाइक कसम, सीरियस। Now जी 2 more minutes and another 2 पॉइंट यहाँ से बन गए गैप ट्रेड में। ट्रेंड अब तक हायर हाई से आई है, मिड बैंड पे लिया है, डन। आज चले गए, आज थोड़ा सा अर्ली जाना। मैं सर थोड़ी कॉपीयर दी रिक्वेस्ट अगे भेज दी है, मुनी वो कहने थोड़ी देर से आ जाना। Alright guys, 2 minutes before European. No problem. First pullback, higher high. NASDAQ जाना चाह रही है वैसे, एरो तो नीचे है 240 में, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है आज। ओ लो जी, अगली कैंडल बन गई, coming down. Let's see 15 minute, 30 minute, 240, 60 and now let's see, अगर यहाँ से बेस बना ली फिर ये 450 पे जा रही है। या तो पिवट को टेस्ट करके आएगी, क्योंकि आपकी 240 में 3 कैंडल्स नीचे की तरफ बनानी है, और अगर यहाँ इसने क्लोज कर दिया ना 190 से नीचे, फिर ये ब्लैक कैंडल 240 में बन जाएगी, क्योंकि एरो तो आ गया है, बट वी नीड 4। सो नेक्स्ट डिटर्मिनेशन इज एट 4 o'clock. At 4 o'clock we will figure out if this candle is below 203. So if you look at the 240 chart, you have one red, one green, second, and now fourth candle will decide which way it wants to open or close. My opinion, my bias, टेस्ला तो आज नहीं है जी, रिपोर्टिंग ऐसा आज तो नहीं है जी, टेस्ला। All right, BDO
टेस्ला की रिपोर्टिंग तो नहीं है जी आज टेस्ला होती तो Tesla nothing. Tesla is tomorrow Tuesday October. Tesla is $1 trillion, so be ready tomorrow. Tesla earnings are tomorrow. So in next 4 hours, time will tell if it closes above or low. Where will SPY go? I don't know. If it goes up, we're buying. If it goes down, we're selling. We have our support and resistance levels, and we are day traders, so we don't care. 1510 is a bit of a divergence right now. Let's see. The NASDAQ is starting to break, coming in 8 o'clock to 12 o'clock candle. Oh, this candle will close. All right, let's see if it breaks 87, today's high. NASDAQ has broken today's high. 368 is last night high, so it should give us some resistance. A NASDAQ 368 should give us something. Maybe make another divergence and make another higher high, and look at the moving average on 60 minutes. MACDs are not moving up at all. Anyway, my bias still stands at $25,450, short for a couple of few points. ES 6832. That still stands. And gold 4,300 would be a good resistance. And if NASDAQ breaks 180, then buy it at 25,000 for today. Good morning. वाह जी वाह आज तो लगता है धक्के नाल ही ट्रेड किया है नहीं ठीक है सर कुछ ना कुछ बन गया और की नहीं यार 450 ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ 370 ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ 370 ਟੁੱਟ ਜਵੇ 370 ਭਾਈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ 450 ਇਕੱਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਫੜ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰ ਸਟਮ ਲਾਈਵ ਚ ਵੀ ਲਿਆ 4105 ਤੇ ਸਟਿਆ ਸੀ ਆਈ ਮੀਨ ਲੌਂਗ 3-4 ਮਾਈਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ $5 ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $5 ਮੀਨ 50 ਟਿਕ $5 ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ $20 ਕੱਢੇ ਨੇ अब देखिए एक होगा $5 का $10 का राइट तो 2 माइक्रो 4 मैं आज गुस्सा गलाया अपने 50,000 वाले टेक प्रॉफिट तो 1800 काट क्योंकि टेक नहीं प्रॉब्लम है कि मार्केट ही नहीं मूव कर रही की करिए देखो थर्सडे पैसे देते हैं मैंने संडे शाम ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਵਾਈਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹਾਲੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਹਰ ਕੋਈ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ IP ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ I have a quick question here.
एक इंस्टीट्यूट जैसा हमारा है, राइट? उसको भी नहीं समझते कि नहीं वो मसला नहीं है। नहीं मसला ये है कि हर निंजा का एक आईडी जाता है साथ। तो आप बेशक एक साथ बैठ के 1000 लोग ट्रेड कर लो, लेकिन नंबर भी हमारे सेम जाते हैं ना ग्लोबली। निंजा की मशीन डिफरेंट हो, जिस तरह ये प्राइमरी रीजन होती है। ऑलराइट गाइस, it is 12 o'clock and I will see you guys tomorrow at, what is today, Tuesday, Wednesday at 9 o'clock, and enjoy. Hopefully you guys made money. If you made it, congratulations. If you didn't, good luck tomorrow. Wait for the numbers or wait for a method. Pick a method, mid-ban, overbought, oversold, whatever. But I think we will come down and break 180 of today, because NASDAQ, if it makes a, we should be okay. Take profit. Log in. ना 410 पे गई और ना पर वहीं पर ये खाली S1 पे ही रही है पिछले 3 दिनों से। R1 3 ही एरिया चले हैं। फ्राइडे को अक्टूबर 17 को भी सिर्फ एक ही एरिया R1 वाला चला, कल R1, आज सिर्फ S1। ये S1 में भी नहीं आए। So see you guys tomorrow. And plus, if you forward my words to Daniel as a कि शिकायत लगानी है, लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन एक दोनों शायद copy the whole video. Ask him to watch not just context out of it. So don't be a troll, man. Just because you're gonna, मैं Daniel की टीचिंग से बाहर कुछ नहीं सिखा रहा. Take care. Enjoy.